चार्ज। तो ये मोमेंटम हो गया। मोमेंटम कैन ऑल्सो बी रिटेन एज फ्रॉम जनरल अंडरस्टैंडिंग momentum is equal to root under 2 into mass into kinetic energy of the particle divided by qb upon sin theta. qb into sin theta. Is that okay? और kinetic energy जो होता है that happens to be if a charged particle q passes through a potential difference of or a potential difference of v a to b v का डिफरेंस है then kinetic energy at b will be equal to ke is equal to q into v होता है। इस फॉर्मूला को रखते हैं तो we are going to get root under 2mq into potential difference divided by qb sin theta. Q can get cancelled and the ultimate thing will be simply this will finally be equal to radius will be equal to 2m capital V upon Q root under into 1 by B sin theta. B sin theta will be out of the root and 2m into capital V by Q, whole root over is going to be the term under square root. This is the radius of the circle. And there is one more thing. If the particle is moving with velocity v and it is going in a circle of radius this r, then we may have a term called period of revolution. So the particle is going in circular orbit or sorry, circular path at a speed v and having radius r. Then period of revolution is going to be time period of revolution. Time period of revolution of charge q in a circle of radius r and moving with velocity v as time period is equal to 2 pi r divided by v. Distance upon time is distance upon velocity is equal to time. And from there we get यहाँ पर ऊपर इक्वेशन अगर हम देखते हैं तो वी हैव r by v को इधर लेकर के आएंगे तो इट विल बिकम 2 pi m by qb sin theta. 2 pi m by qb sin theta. Are we getting this point? Is that okay? So time period के लिए हमारा एक्सप्रेशन हो गया ये
रेडियस के लिए एक्सप्रेशन it would be this in terms of momentum q and v if this particle or this charge q has been accelerated, if charge q charge q has acquired velocity have acquired velocity because of being accelerated through a potential difference V, then this will be the expression for R, and I may highlight this. Also, if I put R by V from above equation into the time period equation, I'll get this thing. Time period of revolution. Time period of revolution. And what will be that? That will be given by T. Capital T of the charge Q in a circle of radius R and moving with velocity V as T is equal to this. And the next thing is, okay, so this gets completed and then we have next page.
There is going to be slight change in the expression if I go for general one. यहाँ पर एक टर्म मेरा रह गया है. It's v square sin square theta it will be. और ये sin theta इस स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाए. And the expression will then become r will be equal to mv sin theta upon q d. The sin theta will not appear in denominator, rather it will appear in numerator. और यहाँ पर भी sin theta will not be in denominator, it will be in numerator. There will be sin theta over here. And the sin theta will go up. Vector sin theta upon qt, and this will be get changed to r is equal to sin theta by b multiplied by root under 2m into potential difference upon q. Time period will become, there won't be any term of sin theta over here. It will be all just qv. एक्चुअली ये न्यूमरेटर में sin थीटा रहेगा और डिनोमिनेटर में भी v sin थीटा रहेगा. Moving with velocity v at an angle theta to magnetic field. To magnetic field. T is equal to 2 pi r by v, 2 pi m by qv. The unit of magnetic field is going to be this. ये सारी चीजें ठीक है. And this is it. Then we are going to move into motion of charge in motion of charge in combined electric and magnetic field. So
there is going to be the net force on the charge. The net force on charge Q moving with velocity v vector under influence of electric field E vector and magnetic field B vector is F net vector is equal to Q into E vector plus V cross B vector. Now, there are two things. E vector सपोज हमारा इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के अलोंग एंड पार्टिकल कैन मूव आइदर इन एक्स वाई और जेड डायरेक्शन. मान लो बी भी ई वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है और बी वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है. ठीक है. पार्टिकल जो है दैट इज मूविंग इन एक्स डायरेक्शन ओनली. It is only going to B vector की वजह से it will not experience any force because the angle between the two is zero. ये वाला वैनिश हो जाएगा, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर वो एक्सेलरेट करता है. सेकेंड कंडीशन, सेकेंड वे इज B वेक्टर भी along x axis है और velocity वेक्टर जो है that is instead of being along x axis becomes along y axis. ठीक है. y एक्सिस के अलोंग अगर v हो जाएगा, चार्ज मूव कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये x डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा और जो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा उसकी वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड में इट विल एक्सपीरियंस अ परपेंडिकुलर फोर्स दैट इज अलोंग z एक्सिस, जिसकी वजह से ये एक वर्टिकल सर्कल में इस तरीके से सर्कलिंग करना चालू करेगा. एंड नॉट ओनली दैट, इट विल सर्कल एज वेल एज गो लाइक दिस, हेलिक्स बनाएगा. और कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी वजह से इसका वेलोसिटी बढ़ता जाएगा एंड इस टाइप का एक बड़ा बड़ा हेलिक्स बनता जाएगा. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? If B vector Yes, and sir. vector both are sorry, B and D vector दोनों अगर पैरेलल हैं एक दूसरे के and the particle, the charge is perpendicular to both of them, then the motion is going to be like this. दूसरा कंडीशन होता है ये y के तरफ होगा तो yz प्लेन में रहेगा. b अगर y के अलोंग रहेगा तो yz प्लेन लेगा. अगर z के अलोंग रहेगा तो भी yz प्लेन में ही मिलता है. ठीक है. अगर E और B वेक्टर दोनों परपेंडिकुलर, तो सपोज E इज अलोंग दिस एंड B इज अलोंग Y वेक्टर. ठीक है. E and B and we are projecting a charge which is maybe parallel to electric field. ठीक है. या दूसरा हो सकता है परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ देम. ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है. मैग्नेटिक सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग करेंगे तो इट विल बी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है. तो देयर विल बी फोर्स अलोंग जेड डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये आगे की तरफ वेलोसिटी इसकी बढ़ती जाएगी.
इस वाले केस में भी इट इज गोइंग टू बी अ हेलिक्स विथ इंक्रीजिंग डायमेंशन. ठीक है, बिकॉज वेलोसिटी इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग एंड देयरफॉर फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन, ये वाला जो एक्सप्रेशन है उससे आर की वैल्यू बढ़ती जाएगी. वेलोसिटी बढ़ती जाएगी इसलिए आर की वैल्यू कंटिन्यूअसली बढ़. ये बात समझ में आ रही है. तीसरा कंडीशन होता है ये पैरेलल ना हो करके इलेक्ट्रिक फील्ड के, मान लो परपेंडिकुलर रहे. ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर और मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर. तो इस कंडीशन में the charge will be experiencing the four sorry the this thing this charge will be experiencing, इसकी मान लो वेलोसिटी v है, वेलोसिटी v वेक्टर है, तो इट विल बी एक्सपीरियंसिंग अ फोर्स अलोंग v क्रॉस b इस डायरेक्शन में या फिर इस डायरेक्शन में फोर्सेस पर लगेगा. ठीक है, जिस डायरेक्शन में भी लगे, अगर इस डायरेक्शन में लगेगा तो इट इज गोइंग टू सर्कल लाइक दिस, और अगर इस डायरेक्शन में लगेगा तो इट विल सर्कल लाइक दिस. ठीक है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज ये करेगा. ओह सॉरी सॉरी, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बोल रहा हूँ. इट विल एक्सपीरियंस अ बैलेंसिंग फोर्स. सॉरी, अगर बी इस डायरेक्शन में हो और वी इस डायरेक्शन में है, द फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स एफ एम विल बी एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, और इलेक्ट्रिक फोर्स एफ ई विल बी एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन. और ये दोनों अगर एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं तो चार्ज विल नॉट बी मूविंग. ठीक है, इट विल रिमेन बैलेंस. इज दैट ओके? और अगर वो दोनों एफ एम और एफ ई दोनों इस तरफ काम करने लगते हैं तो देन चार्ज इज गोइंग टू एक्सेलरेट इन दिस. ये वाला डायरेक्शन तो इसका रहेगा ही, ये वाला भी रहे, ये वाले डायरेक्शन में भी ये मूव करेगा एंड इट इज गोइंग टू गो इन अ सर्कल ऑफ इंक्रीजिंग रेडियस. यहीं पर ये स्पाइरल करता रहेगा, बड़े बड़े रेडियस में घूमता. दिस इज व्हाट द डायनेमिक्स ऑफ अ चार्ज अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक एंड कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग टू. मैं एक एक करके कंडीशंस को लिखता हूँ एंड देन वी आर गोइंग टू वर्क ऑन इट. इसमें सारे कंडीशंस को किया ही नहीं हुआ है. आपकी बुक में सिर्फ एक ही कंडीशन दिया हुआ है, एंड दैट इज इफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, if magnetic and electric field field are mutually perpendicular, perpendicular to each other, and charge q is projected with velocity v, which is perpendicular to E vector and B vector both. So we are assuming
Let E vector be along x-axis and this is x-axis. Then we have B vector along y-axis, B vector along y-axis, this is y-axis, and then we have Z along B vector. So the magnetic field in this case, F B vector, yeah, F magnetic field vector, force due to magnetic field, Fn is going to be equal to Q into, this is V K cap, Vk cap cross B J cap. Is that okay? J cross K is plus I and K cross J is minus I. So it will become minus Q V B I cap. ठीक है? And F vector electric will be equal to plus Q E I vector. Is that okay? ये बात समझ में आ रही है? V cross B जो होगा that will be acting along this line F B vector or F E vector will be acting along this line. And these two vectors, if at some value of velocity becomes equal, ठीक है? For some certain or certain value of V, it is possible that Fa becomes equal to m. Is that okay? That velocity, if we are projecting particle with that velocity, then the particle will keep on moving like this and will not get deflected anywhere. Is that okay? For no deflection, of particle, for no deflection of particle, charge Q, net force on this must be zero. That is F net is equal to Fm plus Fe, which is equal to QE minus QVB I cap should be equal to zero. That implies QE should be equal to QVB or V should be equal to, that is velocity of projection should be equal. QQ cancel हो जाएगा. It should be equal to E by B. So for no deflection,
the charge particle must be projected with a velocity equal to the ratio of electric field upon magnetic field. Is that okay? ये बात समझ में आ रही है? कर्तव्य. Yes, sir. Okay. Next thing is a device called cyclotron. So we are going to do cyclotron, but we are going to do it from we are going to do it from here.
Okay. So cyclotron is a machine to accelerate charged particles or ions to a high energy. It was invented by E.O. Lawrence and M.S. Livingston in 1934 to investigate nuclear structure. The cyclotron uses both electric and magnetic field in combination. Magnetic and electric field in combination to increase the energy of charged particles. Hmm. Uses both electric and magnetic field in combination to increase energy of charged particles. Uh, as the fields are perpendicular to each other, they are called crossed fields. So here also electric field and magnetic field are going to be opposite to each other. Sorry, they are going to be perpendicular to each other. For example, एक मिनट रुक जाओ. Coming back to this. अच्छा देखो लास्ट वाला जो हम लोगों ने एक्सप्रेशन निकाला है फील्ड्स परपेंडिकुलर है ठीक है ई वाला ऊपर है और ई राइट साइड में है इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के अपोजिट है राइट सपोज बी वेक्टर ऊपर की तरफ ना होकर के नीचे की तरफ होता और बी वेक्टर इस तरफ ही होता तो इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों क्या होते एक ही डायरेक्शन में होते हैं इज दैट राइट एंड बोथ वुड हैव एक्टेड टुगेदर टू इंक्रीज द एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो स्पीड को इंक्रीज करता और मैग्नेटिक फील्ड जो है दैट वुड हैव पुट इट इनटू सर्कुलर पाथ स्ट्रॉन्ग सर्कुलर पाथ सो स्पीड इंक्रीज करते हुए या काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करता हुआ इट वुड हैव गॉन स्पाइरल स्पाइरल एंड स्पाइरल ठीक है ये नीचे का स्ट्रक्चर जो है उसको नेक्स्ट पेज में है दैट वी आर गोइंग टू सी दे आर कॉल्ड साइक्लोट्रॉन डीज यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड है out of the plane dots and therefore they are out of plane and there is electric field which will be there out of the paper and because of that electric field and magnetic field together this particle is going to go into a circular sorry spiral path and its speed will continuously keep on increasing speed increase karega matlab kinetic energy increase karega एंड देन एट द एंड ये एग्जिट पाथ है यहां से वो टेंजेंशियली निकल जाता है बाहर आर वी गेटिंग दिस पॉइंट या इनफैक्ट आपकी भी बुक में ये डायग्राम दिया हुआ है आई मे टेक यू टू दिस होप इट इज विजिबल ये वाला दिस इज कॉल्ड डी डी इज सर इट मेरे उधर नेटवर्क इश्यूज है, सो आज थोड़ा अभी एंड कर सकते हैं आप?